खबर असम के जिला सोनितपुर से है, जहां असम के सोनितपुर जिले के मिशामरी के गरुबंधा आदर्श अस्पताल का आज शुभ उद्घाटन किया गया। इस आदर्श अस्पताल का शुभ उद्घाटन ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने किया। उल्लेखनीय है कि असम सरकार की पहल पर सोनितपुर जिले के मिशामरी के गरुबंधा 30 बिस्तरों वाला आदर्श अस्पताल बनाया गया है। इसी के तहत आधिकारिक रूप से गरुबंधा आदर्श अस्पताल का शुभ उद्घाटन विधायक एवं असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने किया। आज के इस उद्घाटन समारोह में असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल के अलावा सोनितपुर जिले के आयुक्त अंकुर भराली, 66 नंबर बोचला विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश कुमार लिंबू आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। असम से प्रशांत वैश्य की रिपोर्ट। गरुबंधा आदर्श चिकित्सालय उन्मोचन करा हल और आहा किछुदिনৰ ভিতৰতে পূৰ্ণাংগ সেৱা এই হস্পিটেলটো আগবঢ়াব। বিধায়ক হৈ থকা অৱস্থাতে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে 2019 চনত আধাৰশিলা কৰিছিল। অলপ পলমকৈ হ'লেও আজি আমি উন্মোচন কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এক আদৰ্শ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ সহযোগত গৰুবন্ধাই এই অনুষ্ঠানটোক ৰাইজৰ সেৱাত উৎসৰ্গ কৰিব। এপ্ৰিল মাহৰ পৰা নতুনকৈ স্বাস্থ্য বিভাগে কিবা পদক্ষেপ ল'ব? চেষ্টা কৰি আছোঁ, আলোচনা কৰি আছোঁ, মত বিনিময় কৰি আছোঁ। অকল মেডিচিনেৰে নহয়, ভাল খোৱা অৰ্থাৎ খাব লগা বস্তু খোৱা, এক্সাৰচাইজ, যোগা, স্পৰ্টছ, খেলা ধূলা, নৃত্য, ফিজিকেল এক্টিভিটি অলপ আমাৰ থাকিব লাগিব। ফিজিকেল এক্টিভিটি আমাৰ নাথাকে, খোৱা বোৱাৰ আমাৰ ঠিক নাথাকাৰ কাৰণেও বহুত বেমাৰ আমি দেখিছোঁ যে BP, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ, ডায়েবেটিছ সমাজত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু যিটো হাৰত বাঢ়ি আছে, আমি ইয়াক যদি বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা নকৰোঁ তেতিয়া ভৱিষ্যত ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে। গতিকে এপ্ৰিলৰ পৰা কিবা পদক্ষেপ ল'ব? এটা ল'ম। এপ্ৰিলৰ পৰা